वेलकम वॉचर में लक्की एंजल और आप देख रहे हैं फूड क्राइसिस 2023। तो जब आप अपने घर के लिए ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और वहां जाके आपको पता चलता है कि अंडों का कीमत 500 रुपए दर्जन हो गया है, दूध 400 रुपए किलो हो गया है, छोटी ब्रेड जो 50 रुपए की आती थी वो 300-400 की हो गई है, और आप सोचेंगे ये चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि साल 2023 पूरी तरह से बुरा साल होने जा रहा है। अमेरिका जैसे देश में खाने पीने की चीजों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए अपनी जरूरतमंद चीजें, इसकी वजह सबको रशिया और यूक्रेन की वॉर बताया जा रहा है, उनकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है। जबकि असलियत क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे पहले ये जान लो कि ये हालात इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये हालात जानबूझकर बनाए जा रहे हैं ताकि पुराने कानून को धीरे धीरे खत्म करके नया कानून बनाया जा सके और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू किया जा सके, जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ खरीद ना सके, बेच ना सके। और आप जरा ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। Showed a 10.6% increase over last year. And because of things like drought, supply chain shortages, and overall inflation next year, you could see these prices pop even more. It's getting expensive to go grocery shopping. Good time to bring in Stephanie Nash. She's a dairy farmer in Tennessee. She joins us now. Stephanie, good morning to you. Do you see food prices going down anytime soon? No, we're not going to see any change in the U.S. market for food prices for Americans. You know, we imported 57% more from Brazil for beef, 12% more in Mexico. I'm telling the government and our politicians and our leaders, what are you doing? What are you doing with American grown? How are you supporting our family farmers and ranchers? And how are you supporting Americans at the grocery store? They're paying anywhere from 10 to 18% more for products. And we need to fix that. We need to fix the way American runs and how we support our family farmers and ranchers. You know, for people who don't understand how farming works, they're probably thinking, well, farmers are getting such high prices for their goods, they must be making out like bandits. Yeah, I mean, that's I guess, we're not getting communication to the public, right? You know, you have JBS, Cargill, Tyson. They're making marginal record profits this year off family farmers and ranchers, while we see Texas beef selling record numbers because they have no water, and you're seeing California dairy farms sell off because they can't afford feed. And it's just crazy. I think the USDA needs to do a better job of implementing programs to feed Americans, to support American grown, and just be stronger. You know, you look at the markets, you look at imports and exports, we continue to support other countries and we're not even supporting the American people. You talk about shortages, a real possibility next year. How bad could it be? You look at Ukraine, you look at Russia, you look at what's going on in the Netherlands. I think there's going to be a lot of food shortages next year. You know, Americans go to the grocery store with confidence. They can get the food that they need. And I think we take for granted what farmers and ranchers do around this country. We take for granted the products that we produce, the products that we produce here in America. And we need to rely on that. We need to protect our rural communities and look for a future that is stronger in our food security. Well, Stephanie, you're certainly putting out the message, and your message is very strong, and we understand. We wish you the best of luck. A difficult time, even when things are great. It's difficult to be a farmer, but it's especially difficult right. जो लोग ये सोच रहे हैं कि महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है और ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से हो रहा है, इस पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएन और दुनिया के एलीट्स मौसम की तब्दीली की वजह बना के किसानों को फसल उगाने ही नहीं दे रहे हैं। कनाडा में गवर्नमेंट ने किसानों को फर्टिलाइजर 30% तक इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को साल 2023 से पहले यूनाइटेड नेशन को एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए कार्बन एमिशन को नेट जीरो पर लेके आना है। को लगता है कि किसान जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से जमीन गर्म हो रही है और मौसम तब्दील हो रहा है। नीदरलैंड में गवर्नमेंट 3000 फार्म को बंद करने जा रहे हैं ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। नीदरलैंड अमेरिका के बाद दुनिया भर में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये छोटा सा देश पूरी दुनिया की
खुराक पूरी करता है, इसीलिए इसे दिस टीनी कंट्री फीड्स द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वहाँ के किसानों से उनके फार्म बंद करने के लिए पैसे ऑफर कर रही है, जबकि न्यूजीलैंड के किसानों का कहना है कि सरकार हमसे हमारे फार्म नहीं हमारी रूह मांग रही है। किसान अपने फार्म बंद करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर वहाँ की गवर्नमेंट किसानों पर दबाव बना रही है कि पैसे ले लो वरना सरकार पैसे भी नहीं देगी और आपके फार्म पर कब्जा भी कर लेगी। न्यूजीलैंड में ये सब कुछ हो ही रहा था कि स्पेन के किसान भी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खेतों को जो पानी देने वाला दरिया है उसका पानी रोक दिया है ताकि किसान खेतों को पानी ना दे सके और फसल उगाई ही ना जा सके। पूरी दुनिया में डेयरी फार्म में जानवरों की फीड महंगी की जा रही है ताकि दूध, अंडे, मीट की कीमत बढ़ाई जाए। ये सब कुछ प्री प्लान एजेंडा बनाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज को यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले कि ये हालात पैदा होते, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ क्लॉस श्वाब ने कहा था कि तारीख यकीनन आखिर मोड़ पर आ गई है। अब जिस तारीख की ये लोग बात कर रहे हैं, आप जरा ये क्लिप देखें, हम इस पर बात करते हैं। History is truly at a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. जी, तो आपने देखा क्लॉस श्वाब कह रहा था कि फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन क्राइसिस आएंगे और ये सारे क्राइसिस खुद ब खुद नहीं आ रहे, इनको पैदा किया जा रहा है। पिछले साल 2022 में बर्ड फ्लू खत्म ही नहीं हुआ, जबकि ये बीमारी सर्दियों में आती है और गर्मियों में खत्म हो जाती है। लेकिन पिछले साल ये बीमारी खत्म ही नहीं हुई, जिसमें लाखों लाख मुर्गियां मर गई, जिसकी मदद से ये मुर्गी की सप्लाई कम करने में कामयाब रहे। मौसमी तब्दीली का नाम देकर किसानों को फसलों में खाद का यूज नहीं करने दिया जा रहा। किसानों को कहना कि अगर वो खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल की ज्यादा पैदावार नहीं कर पाएंगे, जिससे लोगों की खुराक की जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती। इन शैतान के पुजारियों का शुरू से तरीका यही है, ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज, यानी जब तक तबाही नहीं होगी तब तक नई व्यवस्था नहीं हो सकती। वह तबाही द इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर पेज पर छपी है, जिसमें गेहूं का सिट्टा बना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस गेहूं के सिट्टे की जगह इंसानी खोपड़ियां बनी हुई हैं। इसका सीधे सीधा मकसद है कि फूड शॉर्टेज करके दुनिया की आबादी को कम किया जा रहा है, क्योंकि बिल गेट्स के अकॉर्डिंग दुनिया में जो मौसमी तब्दीली आ रही है उसकी सही वजह इंसान है। अब जरा बिल गेट का ये क्लिप देखिए। Asked the top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. अब आबादी कम करने के बाद जो दुनिया बचेगी उनके खाने का सारा सिस्टम यूनाइटेड नेशन देखेगी, जिसमें एजेंडा 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल जीरो हंगर, जिसे पूरा करने की वह कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको खाने के लिए मिलेगा और सबको बराबर मिलेगा। जैसा खाना खाने की आप आदी हैं वह खाना आपको नहीं मिलेगा। किस किस्म का खाना आपको खाने के लिए दिया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।